Good morning to all. Hope you all are safe and healthy. Today, I, Dr. Pooja Jain, on behalf of Global Foundation for Skill Development and Entrepreneurship and Nirwan University, welcome all the dignitaries and participants to the online national webinar. We are going to have an engrossed learning session with our keynote speaker on topic research process and overview. We are grateful for the gracious presence of Dr. Surinder Kaur, CEO VIII. She is eminent personality having in-depth knowledge of professional and personal front, commands high respect and affection with all levels. Before we commence with today's program, I would like to present a brief description of Nirwan University, Jaipur. Our university has been endorsed as one of the most promising university of North India. The university is well known for its excellence in overall development-based education of students to facilitate skill building, entrepreneurship development, and creation of leading professionals. With the focus of employability, our university keep on taking such initiatives for the continuous development of both students and faculties. Now, I would like to take this opportunity to present a brief profile of our keynote speaker, Dr. Surinder Kaur. Dr. Surinder Kaur is BCom, MHRM, and PhD in Human Resource Management. At the outset, let me take this opportunity to introduce that she is the founder and CEO of FORT, Foundation of Research, Assessment, and Training. She is having very rich experience in the field of research work and more than 8 years. It is needless to mention that her more than 30 articles, publications, and journals are very much informative and useful for research across all the fields. She has been guiding scholars for completion of their research work, and her valuable inputs enable moreover 300 scholars to complete and submit their research work across all the fields. She got award in 2014-15. She has been awarded as a Researcher of the Year from IES University. Before going ahead, we are very much delighted and feel highly encouraged by his presence in this caption webinar. I want to call Dr. N.D. Jasuja, Associate Dean, Faculty of Agriculture, Nirwan University, to give brief introduction about university. So over to you. Thank you, ma'am. Thank you. Good morning again, Madam Kaur. Actually, this privilege is should be given to our Honorable President, but because of unavoidable circumstances and sickness, now Madam provided this opportunity to me. So it's really proud and privilege for me to share the university introduction. So basically, this university is established by the Rajasthan government under Section 2 of 2017 and recognized by Government of India under Section 2F of UGC Act 1956. Nirwan University is a state self-financed university, which is sponsored by Nirwan Charitable Trust, which is a leading educational institute in Rajasthan. We believe in quality and hands-on training. We provide and imbibe competitive abilities in the students, and along the industrial experience, we also have some training and some hands-on practices module in our field. The university undertakes research and studies in various fields such as agriculture, engineering, technology, management, law, science, arts, commerce, medical, and so even like education and some therapies subject, religious subjects. We are having so many subjects. It is located in Jaipur, and we are started our all the programs in 2017 onwards. Most welcome again. Over to you, ma'am, please. Thank you so much, sir. Now I take the privilege to give the opportunity to speak your presentation, ma'am. Dr. Surinder, ma'am, over to you. You can start. Thank you so much, Pooja, for this beautiful introduction. First of all, I would like to extend my gratitude to Global Foundation for Skill Development and Entrepreneurship, Nirwan University, Dr. Ravi Goyal sir, and of course, Dr. Pooja Jain for having me on the panel.
I'm sure my discussion would be fruitful for all the research scholars and participants since it covers major and fundamental area of research. My topic would be research process and overview. So shall I start my topic? Just a wait, I'm sharing my screen. Okay, so I start with my topic. My topic is research process and overview. Okay, so first of all, I would like to know about research. What exactly research is? A detailed and careful study of something to find out information about it. Research is defined as careful consideration of a study regarding a particular concern or problem using scientific methods. In general, research refers to search of knowledge and is defined as a systematic and scientific search of information on a particular topic. The process of research comprises of establishing fact, confirming the result of previous research work, solving the problems, and developing new theories and principles. My next slide is about the research objective. So my research objectives, I'm just telling you about. The purpose of the research is to discover answer to question through the application of scientific procedure. The main aim of the research is to find out the truth which is hidden and has not been discovered yet. So through each research study has its own specific ways. So these are some broad objectives of research which I'm going to tell you. First is to gain the familiarity with a phenomena or to achieve new insight into it. The study with these objectives is basically our exploratory or formulative research. So exploratory and formulative research are like mathematical and engineering background research. Second is to portray accurately the characteristics of a particular individual, situation, or a group. So a study with these objectives are known as descriptive research study. My next objective is to determine the frequency with which something occurs or with which it associated with something else. So study with this objective are known as diagnostic research. It is based on science and medical research. So my last objective is to test a hypothesis of a causal relationship between the variable, and study with these objectives are known as hypothesis testing studies. So my next slide is about the types of research. As you can see, there are 7 types of research. First is descriptive. So descriptive research includes survey and fact-finding inquiries of different kinds. The major purpose of descriptive research is description of the state of affairs as it exists at present. Analytical research, the researcher has to use facts and information already available and analyze these to make a critical evaluation of the material. Next is applied research. Applied research aims at finding a solution of a particular and immediate problem facing by society, institution, business, organization, etc. Thus, the central aim of applied research is to discover a solution of some presenting practical problems. Next is fundamental research. Fundamental research is mainly concerned with the generalization and with the formation of a theory. Research concerning some natural phenomena or relating to pure mathematics are the example of fundamental research. Quantitative research is a form of research that relies on methods of natural science which produce numerical data and hard facts. It aims at establishing cause of effect relationship between the variables
using some statistical mathematical tools. This research is also known as empirical research. Graphs and tables of new data, of raw data, can be structured with the help of quantitative research, making it easier for research to analyze the result. Next one is qualitative data. Qualitative data is one which provide insight and understanding of problem settings. Qualitative research is used to gain in-depth understanding of human behavior, experience, attitude, their motivations, and intentions on the basis of observation and intervention to find out the way people feel and what they think. Last one is empirical research, relies on experience or observation alone, often without due regards for system and theory. It is based on coming up with a conclusion which are capable of being verified by observation or experiments. So my next slide is basically research process. What's my topic is, and this is a flow chart of research process. There are 10 steps of research process. First is define research problems and selecting a topic, then move further with the literature review, then set objectives and hypothesis, then research design, research sampling design, data collection, data feeding and coding, then descriptive analysis, then using statistical tools, and then last interpretation and report. So shall we start with our first step, that is identifying and defining our research problem and selecting a topic. This is very most and prime step in the research process, that when we are doing research, we have to first formulate and we have to identify the problem of research and selecting our topic. Broadly speaking, any question that you want to answer and any assumption or assertion that you want to challenge or investigate can become a research problem or a topic for your study. So the best way to understanding the problem is to discuss with your own colleagues, your the expertise in the particular field, and best way to find out your research problem is discuss with your guide that is appointed by the university. So our first and prime step in the research process, first that we have to find out the research problem and select our topic. Now our next topic is extensive literature review. This is very most important step in the research process. I'm just saying कि बहुत सारे research scholars confused होते हैं. मेरे पास काफी रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं एंड दे ऑलवेज से कि मैम हाउ वी राइट अ लिटरेचर रिव्यू. सो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ लिटरेचर रिव्यू को लिखने का. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द लिटरेचर्स, यू हैव टू फाइंड आउट द पेपर्स. आप 10 साल के पेपर ले सकते हो, आप 12 साल के पेपर ले सकते हो, आप 15 साल के पेपर ले सकते हो. इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू एंड योर गाइड. ओके, so for an example, I am taking past 12 years of paper, like अभी 22 चल रहा है, तो मैं 2010 से लेके 2020 तक के जितने भी रिसर्च पेपर मेरे टॉपिक में, what I have chosen my topic, उस टॉपिक के ऊपर जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, जितनी भी थीसिस हैं, जितने भी डिसर्टेशंस हैं, जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, जितने भी न्यूज आई हैं, सारे सब कुछ मैं लेके उसको इकट्ठा करूंगी. और कुछ रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जिनके दिमाग में होता है सिर्फ स्कूपर्स के पेपर लेने हैं, तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन गो विद एनी सोर्स, स्कूपर्स, वेब ऑफ साइंस, यूजीसी की लिस्ट, शोध गंगा, वेयर, व्हाटएवर, कितना भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो. यू हैव टू कलेक्ट ऑल द डेटा. इसका सिंपल वे होता है लिटरेचर रिव्यू को लिखने का. देन फर्स्ट यू हैव टू रीड ऑल द लिटरेचर रिव्यू. First, you just find out the research paper. You just read the research paper and pick out the points. Like you have to pick the objective of that research paper. You have to pick hypothesis of the research paper. You have to pick that methodology, what they have used, the test they have applied, and the outcomes of the study. You have to pick all those 5 points and make it in your own language. In a para format, you have to write it down. बस ये सिंपल तरीका है लिटरेचर रिव्यू को लिखने का.
बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है, तो आपको एक पैरा फॉर्मेट में सिर्फ उसका क्रक्स लिखना है और एपीए फॉर्मेट में आपको ऑथर का नाम लिखना है. So once the problem is formulated, a brief summary is to be written down. The researcher must examine all available research literatures to get him acquainted with the selected problem. You may review two types of literatures like conceptual and empirical papers. So in summary, a literature review has the following functions. First, we can see that it provides a theoretical background of the study. अगर आप past 12 years के पेपर लेते हो तो might be 100 to 150 papers you have reviewed. Okay, you have to review around 100 to 150 papers. तो अगर आप 100-150 पेपर रिव्यू कर रहे हो, so obviously the आपका जो theoretical background है study का, it should be very strong. Okay, next function is it helps you establish the link between what you are proposing examine and what has already been studied. ये बहुत मेन पॉइंट होता है. हम बेसिकली लिटरेचर रिव्यू लिखते इसलिए हैं टू फाइंड आउट द गैप. A literature review, you will find gap of the study. Literature review is basically find out the gap between the previous study and the current study. Okay, तो हमें एक गैप आइडेंटिफाई मिल जाता है कि आज तक कितनी स्टडीज हो रखी हैं हमारे टॉपिक में और एग्जैक्टली हम इनोवेटिव उसमें क्या कर रहे हैं, क्या एड ऑन कर रहे हैं, तो वो हमारा रिसर्च गैप होता है. Next is bring clarity and focus on your research problem. Exactly. Next is improve your research methodology. आप 100-150 research methodology पढ़ोगे तो आपको आपका research methodology लिखने में कोई issue नहीं आएगा. आप exactly बहुत अच्छा methodology use करोगे. Broaden your knowledge based on your research. This is last. So I must say to all scholars, literature review को बहुत अच्छे से पढ़ें. अराउंड 1 to 2 months आपको इसमें पूरा लगेगा, आपको पूरा देना है. अगर आपको अपने रिसर्च को, अपने थीसिस को अच्छा बनाना है तो आपको लिटरेचर रिव्यू को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा और उसको काफी अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं, बहुत सिंपल वे में अपनी ओन लैंग्वेज में उसको लिखना है, as simple as it is. So my next step is set objectives. It is very most important step. Again, research objectives are outcomes that you aim to achieve by the conducting research. Many research project contains more than one more objective. Creating a strong research objective, you help your research achieve its all goals. So first, in general, research objective describe what we expect to achieve by researcher. So for explaining the objectives, I am just taking one example. One topic I took, that is impact of working environment on employee performance with a special reference to banking industry in India. ये सिर्फ एक example है. I don't know is that it has published or not in somewhere. So मैंने in general ये topic लिया. ये management का topic है, core HR का ये topic है. In this topic you can see that working environment is a independent factor and employee performance is a dependent factor. So according to this topic, I have formulated 3 hypotheses. First of all, to be very clear, objectives are not like that you have to write it down in a para format. You have to be very clear about your objectives and write it down in a specific and clear points. That मैंने जिस तरह से इसको लिखा है, according to this study, I have set 3 objectives. First one is to identify the factor that influencing the work environment in the banking industry. तो मेरा पहला objective क्या है? I have to find out the factors that influencing the work environment. Objective is to investigate the impact of working environment on employee performance in the banking industry. My next objective is like it has to be proved, it has to be tested and proved by the statistical tools. My next objective is to create a model for improving employee performance in a specific banking industry. So according to this objective, I have to prepare a model after all my results. So I'll prepare a model and give some suggestions to the banking industry that how they can improve their employee performance. Okay, next is formulate hypothesis. So hypotheses are totally depend upon your objective. So you have to very clear about your objective. So according to the objective, you have to formulate a simple, easy hypothesis.
So hypothesis is a tentative assumption made in order to draw and test its logical or empirical consequences. As such, the manner in which research hypotheses are developed is particularly important since they provide the focal point of research. They also affect the manner in which tests must be conducted in the analysis of data and indirectly the quality of data which required for the analysis. Hypothesis should be very specific and limited because it has to be tested. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी हाइपोथेसिस बहुत लिमिटेड होनी चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, बिकॉज आपको इसको स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू आपको प्रूव करना है. ओके, many scholars are confused about it. देखिए उनको लगता है जितनी ऑब्जेक्टिव उन्होंने प्रिपेयर किए हैं उतने ही उनको हाइपोथेसिस बनाने. नो, एग्जैक्टली नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं है आपने 5 ऑब्जेक्टिव बनाए, आपने 7 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव यू हैव टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसके बेसिस में जो भी ऑब्जेक्टिव आपको लगता है जो टेस्ट के थ्रू अप्रूव्ड होगा, जो टेस्ट के थ्रू ही प्रूव हो सकता है, आपको सिर्फ उसकी ही एक हाइपोथेसिस बनानी है. बहुत रिसर्च स्कॉलर्स पैनिक हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस को लेके. मैं उनको यही समझाऊंगी, डरना नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव में. उसके बाद जैसे आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसके बेसिस में आपको हाइपोथेसिस बनाने हैं. इट इज वेरी सिंपल. So according to my study, I have formulated 3 objectives. तो पहला ऑब्जेक्टिव जैसा मैंने बताया है, इसमें मुझे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं वर्क एनवायरनमेंट के. तो ये मैं थ्रू लिटरेचर रिव्यू, थ्रू इंट्रोडक्शन, थ्रू थ्योरी पार्ट मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ. नेक्स्ट लास्ट जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो मैं मॉडल क्रिएट करना चाह रही हूँ. एंड वो आफ्टर द रिजल्ट आई विल प्रिपेयर अ मॉडल. I create a model. So my second objective is to investigate the impact of working environment on employee performance in banking industry. So this objective is to be proved, is to be tested. So for this objective, I have formulated a hypothesis. First of all, I'm just clearing you, there are 2 types of hypothesis. First is null hypothesis. Second is alternative hypothesis. बहुत सारे स्कॉलर्स इस पॉइंट को लेकर देख के भी काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करती हूँ. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज योर assumption. What you want to prove is your alternative hypothesis. If the alternative hypothesis is rejected, so automatically null hypothesis is accepted. So you have to take both of hypothesis, one null hypothesis and alternative hypothesis. But the alternative hypothesis is one what you have assumed. Okay, so according to the study, I have formulated 1 hypothesis, null and alternative. My null hypothesis is there is no significant impact of working environment on employee performance in the banking industry, and my alternative hypothesis is there is a significant impact of working environment on employee performance in the banking industry. So my next step is preparing research design. This is sorry. My next step is preparing research design. Research design is an extensive structure of how an investigation will happen. An investigate outline, we plan about how primary and secondary information to be gathered. What instrument will be required, how instrument will be utilized, and the anticipated implies for assessing the data. There are 2 types of research design. And first is exploratory and second is descriptive. Exploratory is defined as initial research into a hypothetical or theoretical idea. This is where a researcher has an idea or has observed something and seek to understand more about it.
Whereas descriptive research design is used to describe the phenomena and its different characteristics. It is concerned with gaining a deeper understanding of what phenomena is rather than why and how it takes place. So now next slide is about sampling design. So we have to very clear about our sampling design. First of all, what exactly sample is? It is very simple. Then you can see in the picture. Then above picture is about the population, our universe. So it is exactly not feasible and even expensive to collect the whole data from population. Okay, population or universe. So we just pick out the lesser crux of the population, that is called a sample. There are two types of sampling method. First is probability sampling method. Second one is non-probability sampling method. In probability sampling method, there are four types of method. First is random sampling method. Second is cluster sampling method. Third is systematic sampling method. Fourth is a stratified random sampling method. And in non-probability sampling method, there are again four methods. First is convenience sampling method. Second is judgmental sampling method, snowball, and quota sampling method. So I'm going to explain you sampling method because it is very important part. बहुत से research scholars यहाँ पे अटक जाते हैं exactly how we can select our sampling method, क्या method use करना है. So I'm just gonna explain you in a short period of time that for in the probability sampling method, first is simple random sampling method. It is very simple. Every member of the population has an equal chance of being selected. Your sampling frame should be include the whole population. Second is systematic sampling method. Is similar to simple random sampling method, but it is usually slightly easier to conduct. Every member of the population is listed with a number, but instead of random generating number, individuals are chosen at regular intervals. Okay, whereas stratified random sampling method, involves the dividing the population into subgroup. For an example, we took a sample in male and female. So this is our subgroup. That male is one group, female is two group. That may be differ from a different way. It allows you draw more precise conclusion by ensuring that every subgroup is properly represented in the sample. Next is cluster, also involves dividing the population into subgroup, but each subgroup should have similar characteristics to the whole sample. Instead of sampling individuals from each subgroup, you randomly select in the entire subgroup. Now come to the non-probability sampling method. First is convenience sampling method. It is very simple method. इसमें क्या होता है, आप किसी एक को क्वेश्चनेयर दे दो, वो आपका क्वेश्चनेयर फिल कर देगा और उसको जो मिलेगा वो आपका क्वेश्चनेयर, आपका जो सैंपल है वहां से आपको इकट्ठा करके दे देगा. Next is purposive sampling method, is also known as judgmental sampling method, which involves the researcher using the expertise to select a sample that is most important and useful for the purpose of the research. If your population is hard to assess, so we can use a sample snowball sampling method, which recruit a participants via other participants. The number of people you have assessed the snowball as you get in contact with more people. Last is a quota sampling method, can be defined as a sampling method of gathering representative from a group. Application of quota sampling ensures that sample group represents certain characteristics of the population chosen by the researcher. So my next step is data collection method. So it is very most important step because your results are totally depend upon your data collection method. How you collect your data, what the method you have choose, it's really very important. So all this research scholar, be very careful when you are going to collect your data. So there are 4 types of
methods in data collection, that is observation method, interview method, collection of data through questionnaire, and collection of data through schedule. The observation method is very commonly used method, especially in studies relating to behavioral science. Observation became a scientific tool and the method of data collection for the researcher when it serves a formulative research purpose, is systematically planned and recorded and is subject to check and control on reliability and validity. In interview method for data collection involves presentation of oral, verbal stimuli and reply in terms of oral, verbal responses. This method can be used through personal interview method or telephonic interview method. Next method is collection of data through questionnaire. This method is quite popular, and particularly in case of big inquiries, it is being adopted by individuals, research scholars, private organization, government organization also. In this method, a questionnaire is sent to the person concerned with the request to answer the question and return the questionnaire. A questionnaire consists of a number of questions printed or typed in a definite order or a proforma. And last step is data collection through schedule. So this method is very much similar with the questionnaire, with a little difference, which is lies the fact that schedule are being filled by the denominator, which are especially appointed by the researcher for the purpose of the study. So in this method, questionnaire जो है, it is very common and very useful method. और अगर PhD researchers की बात करूँ मैं, जो PhD कर रहे हैं, वो basically अगर वो human ये management के हैं, उसके हैं, तो उनको ज़्यादातर questionnaire ही वो fill करवाते हैं. Finance के हैं, वो secondary data में काम करते हैं. तो questionnaire में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चनियर बहुत स्पेसिफिक हो, बहुत क्लियर हो, लोगों को समझ आए और इजीली वो फिल कर सके. आप पायलट स्टडी भी करा सकते हो क्वेश्चनियर में. आपने क्वेश्चनियर प्रिपेयर किया, आपका सैंपल फॉर एन एग्जांपल 500 है, तो आप 100 to 150 के सैंपल में एक आपका पायलट स्टडी करा सकते हो. उससे आप ये चेक कर सकते हो कि आपका जो क्वेश्चनर है वो एग्जैक्ट रिलायबल है कि नहीं है, आप आगे फर्दर उसमें स्टडी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. सो आई मस्ट रिकमेंड दैट जो भी क्वेश्चनर प्रिपेयर करता है, एक छोटी सी पायलट स्टडी जरूर करें, वो आपके रिसर्च में आगे आपको बहुत ज्यादा काम आए. माय नेक्स्ट स्टेप इज डेटा फीडिंग. ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. ऑब्वियसली सारे ही स्टेप काफी इम्पोर्टेंट हैं. तो ये स्टेप बेसिकली होता है और थोड़ा सा टेक्निकल भी होता है. स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं. तो डेटा फीडिंग और डेटा एंट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन्वॉल्व इन एनी एनालिसिस. डेटा में एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म. वो आपको पेपर में भी हो सकता है, आपके पास हार्ड कॉपी हो सकता है, कंप्यूटर में हो सकता है, व्हाटएवर. अगर आपने क्वेश्चनर फिल कराया है और आपने हार्ड कॉपी है आपके पास, देन यू हैव टू राइट इट डाउन इन एक्सेल शीट, एनी एक्सेल शीट. आप उसको कॉपी कर सकते हो, उसको आपकी डेटा फीडिंग कर सकते हो. बट अगर आपने क्वेश्चनर गूगल फॉर्म में बनाया है और आपके पास रेस्पॉन्सेज आते हैं, तो मैंने एक स्क्रीन शेयर करी है. यू कैन सी दिस. ये एक्सेल का स्क्रीन है. तो अगर आप रॉ डेटा देखोगे तो रॉ डेटा कुछ ऐसा होता है. मैंने क्वेश्चनर फिल करवाया था. दैट माय क्वेश्चनर इज इन लिकर्ट 5. somewhere it write like always, often, strongly agree, disagree. That it is a raw data that you have received by the respondents via your mail. Okay, so we have to convert it raw data into a specific manner. So this is a specific manner where feeding our data. ये SPSS का शीट है. इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट को ही मैंने कन्वर्ट किया है इस फॉर्मेट में.
तो जो डेटा फीडिंग होता है ये पर्टिकुलर मैनर होता है उसको फीड करने का। कुछ मिसिंग एंट्रीज होती हैं, आपको उससे भी मैनेज करना पड़ता है, और डबल एंट्रीज होती हैं, आपको उसको भी मैनेज करना होता है। और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको आपके पूरे सैंपल जितना भी आपने कलेक्ट किया है, आपको इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में SPSS का शीट में आपको एंट्री करनी होती है। मैंने जो क्वेश्चनर प्रिपेयर किया था वो 5 लिकर्ट्स में था। 1 is stands for strongly disagree, 2 is stands for disagree, 3 is for neutral, 4 is agree and 5 is strongly agree। So इस तरह से आपको डेटा फीडिंग करनी है और उसके बाद आपका एनालिसिस पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। Okay, so next step is descriptive analysis. Descriptive analysis is helping in analysis to find out, to manage with our dependent and independent variables of the study. Descriptive analysis help in representing a snapshot of a sample at a specific time, and in turn able to give more clarity of the observed behavior. In descriptive analysis, we have used various techniques like arithmetic mean, standard deviation, frequency, and mean, standard deviation. Tables, charts are performed via SPSS 22, 24, and Excel 2007, 2009, whatever you have. Okay, the descriptive analysis, you can see I have shared a SPSS output sheet also. अगर आपको दिख रही हो तो मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगी। फर्स्ट रो इज n is your sample size, minimum, maximum, mean, standard deviation. This is a descriptive statistic. Apart from this, डिस्क्रिप्टिव में आपके सारे टेबल्स और चार्ट्स भी आते हैं। आपने क्वेश्चनर प्रिपेयर किया, उस क्वेश्चनर में आपने फॉर एन एग्जांपल 25 क्वेश्चंस लिए हैं, तो उन 25 क्वेश्चंस का आप पूरा हर पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप टेबल बनाओगे, आप चार्ट बनाओगे, उसके इन्फरेंसेस लिखोगे, उसके इंटरप्रिटेशन लिखोगे। दैट पार्ट आल्सो इंक्लूड्स इन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, और थीसिस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। Next part is using statistical tools. So first is descriptive analysis. So descriptive analysis is I have already told you about descriptive analysis. So in descriptive analysis, arithmetic mean, standard deviation, tables, pie charts, and graphs are there. So after the descriptive analysis, reliability and validity test will be applied. Reliability and validity test बहुत important होता है आपकी स्टडी के लिए, to know the internal consistency of the data. वाया आप क्रॉनबेक अल्फा जो वैल्यू होता है उसके थ्रू आप रिलायबिलिटी चेक करते हो। क्रॉनबेक अल्फा का वैल्यू दैट शुड बी मोर देन 0.7, तो आपका जो डेटा का इंटरनल कंसिस्टेंसी है वो काफी अच्छा है। अगर 0.7 से ज्यादा होता है, और मैं आपको एक और बात बताऊं, एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी सैंपल के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप ज्यादा सैंपल लोगे, आपका रिलायबिलिटी ज्यादा रहेगा। आप कम सैंपल में काम करोगे तो आपका रिलायबिलिटी कम रहेगा। वैलिडिटी हम चेक करते हैं केएमओ टेस्ट से, केएमओ और बार्कले टेस्ट से, उनका भी वैल्यू होता है। उसमें हम सैंपल एडिकेसी चेक करते हैं। हम केएमओ टेस्ट से अपनी सैंपल एडिकेसी चेक करते हैं। बार्कले टेस्ट से हम अपने क्वेश्चनर के लिंक को चेक करते हैं। हमने अपने क्वेश्चनर में जो क्वेश्चंस लिए हैं उनके बीच के हम लिंक को चेक करते हैं। तो ये स्टार्टिंग की रिलायबिलिटी वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्टैटिस्टिकल टूल एनालिसिस का ही ये पार्ट है। आफ्टर द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी we have to find out the normality distribution. So it is also very important part. हमें अपने स्टडी का ये चेक करना है कि हमारा स्टडी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीनली लाइक आपकी स्टडी में आउटलायर्स हैं, आपका स्टडी में कितने आउटलायर्स हैं वो चेक करना। So according to KS and Shapiro will cut the test by which we can check our normality distribution. So normality check लगाने के बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा whether we have to apply parametric test or non-parametric test. If our study is normally distributed, so we can go with all parametric test. If our study is not normally distributed, so we have to go with all non-parametric test.
So these are a few list of parametric and non-parametric tests. So parametric tests are like paired t-test, unpaired t-test, one-way ANOVA test, two-way ANOVA test, Pearson correlation test. And non-parametric test is Wilcoxon rank sum test, Van Whitney U test, Pascal-Wallis test, Friedman test, Pearson correlation test. तो मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ पैरामेट्रिक टेस्ट का और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का. So पहला टेस्ट है पेयर टी टेस्ट. So पेयर टी टेस्ट is basically used to compare the mean of two paired groups. मैं एग्जांपल के साथ इसको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ स्टूडेंट्स के लिए. फॉर एन एग्जांपल कोई कंपनी है, उसने ट्रेनिंग प्रोवाइड की और उसको ये चेक करना है कि उस ट्रेनिंग से क्या बेनिफिट है, वो ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव है. ओके, सो हियर मैं क्या करूंगी, मैंने एम्प्लॉइज को दो क्वेश्चनर दिए. फर्स्ट प्री टेस्ट एंड सेकंड इज पोस्ट. वेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई द गैप बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप. ओके, तो प्री एंड पोस्ट की जहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे मुझे गैप आइडेंटिफाई करना है प्री और पोस्ट का, सो मैं वहां पे पेयर टी टेस्ट अप्लाई करूंगी. तो मैं क्वेश्चनर जो फ्रेम करूंगी, मैं वो उस क्वेश्चनर को उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से बिफोर ट्रेनिंग एक बार फिल कराऊंगी एंड उसी एम्प्लॉय से आफ्टर ट्रेनिंग मैं उनको फिल कराऊंगी. एक एम्प्लॉय से 2 बार रेस्पॉन्सेस मेरे पास हैं. अब उन 2 रेस्पॉन्सेस को मुझे कंपेयर करना है. उससे मैं कंपेयर करके ये आइडेंटिफाई कर सकूंगी कि उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग से वो कितना ज्यादा सीख पाया है और वो ट्रेनिंग एग्जैक्टली कितनी इफेक्टिव है. ओके, तो इस तरह की जब स्टडीज होती है जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के बीच में आपको गैप निकालना है या आपको कंपेयर करना है, देन यू हैव टू अप्लाई पेयर टी टेस्ट इन पैरामेट्रिक टेस्ट. Next is unpaired t-test. Unpaired t-test is also known as dependent t-test. Okay, it is used to find out the difference between two group and two variable. जहाँ पे भी आपके 2 वेरिएबल्स हैं, 2 सैंपल हैं, आपको उनके बीच का गैप, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है, then you have to go with independent t-test. For an example, I have to find out the awareness level of digital marketing between male and female. So male is 1 group, female is 2 group. तो मुझे awareness level चेक करना है मेल और फीमेल का, then मैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का यूज करूंगी. ठीक है, तो जहां पे भी 2 ग्रुप के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है, इंडिपेंडेंट और पेयर टी टेस्ट का यूज होगा. Next is one-way ANOVA test. One-way ANOVA test is used to identify the difference between more than 2 groups and variables. जहाँ पे independent t-test 2 ग्रुप के बीच में डिफरेंस निकालता है, जो one-way ANOVA है वो more than 2 ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस निकालता है. Okay, for an example, मैंने एज क्राइटेरिया लिया है, मुझे एज के बीच में डिफरेंस निकालना है टू नो द अवेयरनेस लेवल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग between the age group. So age group would be less than 18, 18 to 25, 25 to 30, 35 to 30 to 35, 35 to 40 and more than 40. There are 5 factors, 5 categorized in the age group. तो यहाँ पे 2 से ज्यादा मेरे पास कैटेगरी हैं where I have to find out the difference between. So I have to apply one-way ANOVA test. Next step is two-way ANOVA. Two-way ANOVA is a further part of one-way ANOVA. अगर आप SPSS से करोगे तो two-way ANOVA exactly आपको two-way ANOVA के नाम से कहीं पे भी नहीं मिलेगा. वो एनालिसिस में जाके आपको मल्टीवेरिएट के नाम से मिलता है, यूनिवेरिएट के नाम से मिलता है. So two-way ANOVA is used to analyze the effect of 2 independent variables on dependent variable. For an example, effect of age and gender on consumer buying behavior. मैंने एक एग्जांपल लिया, मुझे एज और जेंडर का डिफरेंस निकालना है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. वन-वे ANOVA में जेंडर के बीच में निकला, टू-वे ANOVा में एज ग्रुप में जो कैटेगरीज थे 4-5 उसके बीच में निकला, टू-वे ANOVा में जेंडर और
एज के बीच में डिफरेंस वो निकालेगा आपके बाइंग बिहेवियर को लेके। तो जहां पे भी 2 से ज्यादा आपके इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, कैटेगरीज हैं, तो आप 2-वे अनोवा यूज करोगे। नेक्स्ट इज पियर्सन कोरिलेशन। तो कोरिलेशन से अगर हम समझें तो बहुत कॉमन लैंग्वेज है। कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप। तो पियर्सन कोरिलेशन, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट आप निकाल सकते हो। बाइवेरिएट कोरिलेशन बेसिकली होता है जहां पे एक ही इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो वहां पे हम बाइवेरिएट कोरिलेशन लगाते हैं। तो कोरिलेशन बेसिकली होता है टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो अगर मल्टीवेरिएट में हम जाते हैं तो हमारे पास अगर 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं तो हम मल्टीवेरिएट मतलब मल्टीपल कोरिलेशन हम लगाते हैं। So this is a parametric test, what I have explained you. Now non-parametric test. So non-parametric test बहुत simple है। Wilcoxon test जो है, it is a substitute of pair t-test. अगर आप पैरामेट्रिक में जा रहे हो तो आप पेयर टी टेस्ट यूज करोगे, अगर आप नॉन पैरामेट्रिक में जा रहे हो तो आप विल्कोक्सन टेस्ट यूज करोगे। ओके, इट इज अ सब्स्टिट्यूट। तो मैन विटने इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इंडिपेंडेंट अनपेयर टी टेस्ट। Pascal-Wallis test is a substitute of one-way ANOVA test. If you are going to for non-parametric test or you have more than 2 categories in your studies, so you have to apply Pascal-Wallis test. Fragment test is a substitute of two-way ANOVA test, and Spearman correlation is a substitute of Pearson correlation. But Spearman में एक बात है कि आप उसमें इंटरवल्स में काम कर सकते हो, ठीक है। तो स्पीयरमैन आप यूज कर सकते हो अगर आपको नॉन पैरामेट्रिक आपका जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सो यू कैन गो विद स्पीयरमैन कोरिलेशन अगर आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे टेस्ट हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स में। तो इट इज नॉट इजी कि मैं सारे टेस्ट यहाँ पे बता पाऊँ बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम पीरियड भी है। तो मैंने थोड़े टेस्ट और आपको मैं बताना चाहूंगी। दैट इज वन इज 3-way ANOVA test. So exactly 3-way ANOVA test is used to determine whether there is 3-way relationship among the variables on and outcomes. It determines the effect of any 3 factors it had outcome. जहाँ पे हमने 2-way की बात करी, तो 2-way में आप एज और जेंडर के बीच में आप डिफरेंस निकाल रहे हो। तो 3 में आप एज, जेंडर, आप एक्सपीरियंस और आपके डेजिग्नेशन, आप मोर देन 2 आपके अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो आप उसके बीच में डिफरेंस निकाल सकते हो और एक रिलेशनशिप आप बना सकते हो 3-way ANOVA में। और अनोवा के 3-way ANOVA के आगे फिर मनोवा आता है। इट्स रियली वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट अभी टाइम कम है तो मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं समझा पाऊंगी। नेक्स्ट टेस्ट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन इज रियली वेरी वाइड टॉपिक। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे छोटा सा लीनियर रिग्रेशन बता रही हूँ। रिग्रेशन बेसिकली हम क्यों लगाते हैं, जहाँ पे हमें प्रेडिक्शन करना होता है, हमें किसी स्टडी में प्रेडिक्ट करना, हमें इम्पैक्ट निकालना है कि इंडिपेंडेंट फैक्टर का क्या इम्पैक्ट है डिपेंडेंट फैक्टर में। सो वी ऑलवेज यूज रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, linear regression analysis predict the variable based on the variable. The variable we want to predict is called a dependent variable, and the variable we are using to predict is called an independent variable. So there are many types of regression, that is curve estimation, non-linear regression, logistic regression, and so many regressions are there. So ये बहुत lengthy study है. Now my last topic is structure model equation. Wait a minute. So structure model equation is a set of statistical technique used to measure and analyze the relationship of observed and latent variable. Similarly, but more powerful than regression analysis, it is examine linear causal relationship among the variables while simultaneously account for measurement error. ये एक आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपको सैम का
आउटपुट मैंने यहाँ पे शेयर करा है. दिस इज व्हाट माय स्टडी वाज. मैंने पब्लिश किया था इसको. एंड हियर माइक्रो फाइनेंस इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दीज आर माय लेटेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल: इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल. सो इस तरह से ये एक मॉडल बनता है. अगर आप सैम में काम करते हो, सैम एग्जैक्टली SPSS में नहीं होता है, इसका लेटेस्ट वर्जन होता है एमोस का. आप एमोस के अंदर सैम के आपके स्ट्रक्चर मॉडल इक्वेशंस आप एग्जैक्टली बना सकते हो. तो ये हायर लेवल होता है स्टडी का. आप अगर थीसिस लिख रहे हो तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप जरूर मॉडलिंग आप बनाएं आपकी स्टडी में. और इस तरह का मॉडल बन के आता है. और ये काफी लेंदी टॉपिक है, काफी लेंदी टॉपिक है. मतलब मैं अगर इसमें बोलने जाऊं तो 4 से 5 घंटे आराम से और 4-5 सेशन हमारे निकल जाएंगे. तो मैं यहाँ पे वाउंड अप करती हूँ. माय नेक्स्ट स्टेप इज इंटरप्रिटेट एंड रिपोर्ट. सो आपने सारा एनालिसिस कर लिया, आपने सैम्पलिंग मेथड लिया, आपने एनालिसिस किया, डेटा कलेक्शन किया, सब कुछ किया. आफ्टर ऑल आपको एक रिपोर्ट सबमिट करानी होती है यूनिवर्सिटी को. दैट इज अ रिपोर्ट. ओके. सो रिपोर्ट एज पर द गाइडलाइंस, बेसिक इन जनरल जो गाइडलाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली 5 चैप्टर्स होते हैं किसी भी thesis के. Chapter 1 is about introduction. You have to mention all the introductory part in the chapter 1. Second is literature review. I have already told you about the literature review. You have to mention it in your second chapter. Chapter 3 is about research methodology. And research methodology, you have to write it down, your methodology, your what test you are going to use, what sampling method you are going to use, what the methodology of your research are written in the chapter number 3. Chapter number 4 is data interpretation and analysis. ये सबसे important chapter होता है और इसमें आपको अपना सारा analysis part लिखना होता है. You have to write all descriptive analysis, you have to write your empirical analysis, your reliability factor analysis अगर आप लगा रहे हो, वो सारी चीजें आपको इसमें cover करनी होती हैं. And last chapter is your conclusion. Chapter number 5 is your conclusion. आप सारा एनालिसिस करने के बाद what you have concluded, what's your finding is, what's your suggestions is, what's your hypothesis testing conclusion, what's implication, what scope for the further study, and what the limitation you have faced in your research work, that you have to mention all 8 in your chapter number 5. तो अगर कोई भी thesis में काम कर रहा है तो ये एक फ्लो चार्ट है, एक सिंपल फ्लो चार्ट है. आप किसी भी यूनिवर्सिटी UGC गाइडलाइंस में भी अगर आप चेक करोगे तो यही एक आपको फॉर्मेट मिलेगा. इस तरह से थीसिस प्रिपेयर की जाती है. दिस इज अ फ्यू बुक्स व्हिच आई कैन रिकमेंड यू. लाइक कि आप लोग को अगर रिसर्च में काम करना है तो कुछ बुक्स आपको एग्जैक्टली पढ़नी चाहिए. तो अगर इंडियन ऑथर्स में मैं बोलूंगी तो SP गुप्ता और CR कोठारी बेस्ट बुक हैं. आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि रिसर्च प्रोसेस आप समझोगे कैसे और आप स्टैटिस्टिकल टूल्स को भी समझ पाओगे अगर आप बुक्स, अच्छी बुक्स पढ़ते हो. तो ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने लिखी हैं, कुछ इंडियन ऑथर हैं, कुछ फॉरेन ऑथर हैं. तो ये बुक्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हो. थैंक यू सो मच. रिसर्च इज क्रिएटिंग न्यू नॉलेज एज पर द नील आर्मस्ट्रॉन्ग. सो थैंक यू सो मच. माय प्रेजेंटेशन इज ओवर. I hope आप सभी को पसंद आया होगा. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It was so much informative, and definitely scholars will, it will be useful for the scholars, basically, students who are actually doing PhD. So this is so much, this is actually the basics, what we, students who are doing PhD. So exactly. This is something very important. Very nicely you have explained everything. So, sir, do we have any questions from our guests or participants? Ma'am, ma'am has explained such in beautiful way and in very easy words that I am surprised. There is no question. Everyone is appreciating just only about this, that concepts and fundamentals are given in a very effective way. It is a very knowledgeful session and very informative session, ma'am. Thank you. मैं कुछ स्कॉलर्स के लिए बोलना चाहूंगी. स्कॉलर्स रियली बहुत पैनिक कर जाते हैं जब वो रिसर्च PhD अपनी स्टार्ट करते हैं
वो पैनिक करते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं यूनिवर्सिटीज से भी बोलूंगी और मैं सबको बोलूंगी कि स्कॉलर्स को एक पर्टिकुलर गाइड प्रोवाइड की जाए। उनको कुछ आप यूनिवर्सिटीज में कुछ आप सेशंस दें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सबके बस की बात नहीं है एग्जैक्टली। तो कुछ सेशंस बच्चों को प्रोवाइड करें कि वो प्रॉपर गाइडेंस उनको मिल पाए, वो अच्छी पीएचडी थीसिस अपनी लिख पाए। Perfectly, ma'am. Definitely, yes. Completely agree with you, ma'am. So, मैम okay. एज यू सजेस्टेड हम कोर्स वर्क में भी एक्सपर्ट्स अवेलेबल करवाते हैं. वी आर हैविंग वेल लर्नड statistician in our coursework module. Very appreciated. They are interacting, yeah, they are regularly interacting with scholars to provide all the fundamentals of statistics. Okay, okay. Very appreciated. Ma'am is my senior only. We both studied our PhD from the same university. So she's always like a guide to me. When I was doing my PhD, she always helped me so much. So for that also, Yes. thank you so much, ma'am. And now I would like to give the vote of thanks. So it was such an engrossing session and fruitful learning session about research process and overview. On behalf of Global Foundation for Skill Development and Entrepreneurship and Nirwan University, I would like to take this opportunity to conclude this session with the vote of thanks. I like to express my deep gratitude to President NUJ Honorable Dr. Ravi Goyal sir, who have always encouraged and motivated us by his never-ending hard work, passion, foresight, and vision for the education system. All the dignitaries and our most valued invited guest, keynote speaker Dr. Surinder Kaur. It was such an engrossing and in-depth learning session. Once again, thank you, ma'am, for gracing with your expertise-based knowledge. My sincere thanks to Nirwan management team who made this webinar a resounding success through their cooperation. Last but not least, thanks to all who attended our live session on Facebook. Be tuned with Nirwan University for more captivating sessions. Thank you so much. Thank you. Thank you again, ma'am, for enlightening us and providing us all the required information. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. So we can close. Yes, thank you. Thank you so much, ma'am.